Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 3, that is computer and its part. तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में आपके स्मार्ट मशीन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था. आज हम कंप्यूटर उनके पार्ट्स के बारे में लर्न करेंगे. ओके, सो हियर लेट्स सी लर्निंग इन दिस चैप्टर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू. सो बच्चों, यहाँ पे हम 4 पार्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे. So children, we have many body parts to do our work, such as eyes to see the things, ear to hear, and nose to smell, and mouth to speak and taste the food, hands to do work, right? Now, a body is made up of many parts like hands, leg, ears, eyes, nose, mouth, etc. Each part has an important work to do. Similarly, a computer is also made up of many parts and each part having important work to do. The 4 main parts of a computer are monitor, keyboard, माउस एंड सीपीयू. अब बच्चों एक चीज देखिए यहाँ पे, जो हमारी बॉडी है उसमें काफी बॉडी पार्ट्स है, राइट? जैसे हैंड है, हैंड से आप खाना टेस्ट करके नहीं बता सकते कि कैसा बना है, हैंड से आप स्मेल नहीं कर सकते, राइट? सो ऐसे ही जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके एक क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है, राइट? सो इन द सेम वे जो कंप्यूटर है उनमें भी पार्ट्स होते हैं एंड दे हैव अ पर्टिकुलर, माय बैड बच्चों, दे हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. जैसे कि एक का नोज का काम है आपको स्मेल करके बताना एंड लेग्स का काम है टू वॉक करना. सो वैसे ही जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, तो इनके एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करते हैं. चलिए अभी जो हम पार्ट्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देयर आर 4 main parts of the computer: monitor, keyboard, mouse and CPU. So here you can see the computer system. Okay, तो ये चीजें, ये 4 main parts are very necessary. Okay, जैसे कि CPU inside कैबिनेट. अब बच्चों देखिए 2 वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे इन्होंने, सीपीयू और कैबिनेट. कैबिनेट इज द आउटसाइड कवर और सीपीयू जो होता है बच्चों एक छोटी सी चिप होती है जो कि क्या होती है आपके कैबिनेट के अंदर, जो पूरा सिस्टम होता है उसके अंदर वो क्या होती है, फिट होती है. वहीं पे मॉनिटर बच्चों जिसपे आप चीजें देख पाते हो, जो भी आपका इनपुट आउटपुट परफॉर्म हो रहा होता है. कीबोर्ड जिसे आप यूज करते हो टू टाइप द वर्ड्स, लेटर एंड नंबर्स. एंड हियर माउस टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, जैसे आपको कोई फाइल सिलेक्ट करनी हो गई, फोल्डर सिलेक्ट करना हो गया. सो फाइल एंड फोल्डर आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू, right? So we will read it out, we will get to know about it in our upcoming classes and upcoming chapter. Okay, so here you can see Quizmania. So write the name of the parts of the computer. So आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, type of fill in the blanks, not a fill in the blanks, you have to complete the word here. Okay, keyboard, the second one CPU, third mouse, and fourth is your monitor. So I hope you will be able to do this. Okay, I am leaving it for you. So now let's move forward and let's see the next topic. Okay, why does the computer need so many parts? What do they do? So आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर को इतने पार्ट्स की जरूरत क्यों है, उन्हें आखिर इन पार्ट्स की जरूरत क्यों है, वो क्या काम करते हैं, इन्हें जानने के लिए अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. सो लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज मॉनिटर. सो द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. How does it look like? A TV screen. All the work we do on a computer displayed on the screen. So जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो वीडियोस होती हैं, कोई भी ड्रामा या फिर कार्टून आपका टीवी पे दिखता है ना सामने, तो सेम आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है मॉनिटर, वो भी सेम वर्क परफॉर्म करता है, आपको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर चीजें जो भी आप कर रहे होते हो. Did you know the front portion of the screen is called the screen? The front portion of the monitor is called the screen or display. Okay, always remember it. जो आपका monitor का front portion होता है जहाँ पे आपको चीजें display हो रही होती है, that is called screen or display. Now, did you know there are 2 type of monitor? The first type is LED or LCD monitor, and second is CRT, cathode ray tube. That is the old type of computer. Okay, we do not use in today's time. Now let's see keyboard. So the keyboard is made up of several small buttons called keys. Each key has a number, letter or word written on it. So here you can see the picture of keyboard. Okay, keyboard looks like this. Keyboard पे आपके बहुत सारे buttons होते हैं and it helps you to
type on the monitor. Suppose आपको अपना नाम type करना हो गया, age type करना हो गया, at that time keyboard helps you. We write letters, words and numbers on a computer using keyboard. Now, did you know writing on a computer is called typing? So whenever you are pressing the buttons on a keyboard, that means you are typing something. Okay, now let's see mouse. So a mouse is used to point at items shown on the monitor. The mouse usually has 2 or 3 buttons and a small wheel between the buttons. So now you can see here, if you will see the picture very carefully, then you will be able to see that here जो आपका mouse है, माउस के बीच में एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोल व्हील, जो कि आपके स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है. नाउ वी ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स एंड टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ माउस. तो बच्चों, जब आप माउस का यूज करते हो अपने किसी आइटम पे क्लिक करने के लिए, जैसे फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, एंड पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए, गेम्स को प्ले करने के लिए. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस. देयर आर mechanical mouse and optical mouse. Okay, now here let's understand CPU. So what is CPU? CPU is the most important part of a computer. It is called the brain of the computer. जैसे हमारी human body में एक brain होता है जिसमें सारी चीजें process कर रही होती हैं. In the same way a computer has a brain, CPU. CPU is called the brain of the computer. It does all the tasks that we want the computer to do. It also controls all the other parts like the monitor, keyboard and mouse. These parts have to be connected to the CPU. Okay, जो ये parts भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो monitor हो या आपका keyboard हो या mouse हो, आपको इन parts को connect करना पड़ता है किससे? आपके CPU से. CPU is called the brain of the computer. It is the central processing unit. Without the CPU, you can't use your computer, mouse or keyboard. अंडरस्टूड. सो आपको क्या करना होता है, अपने माउस को, कीबोर्ड को और मॉनिटर को कनेक्ट करना होता है किससे? सीपीयू से. एंड दीज पार्ट्स हैव टू बी कनेक्टेड टू द सीपीयू थ्रू मदरबोर्ड. फॉर देम टू वर्क, द मदरबोर्ड विद द सीपीयू आर kept in a box called cabinet. As I already told you, the outer cover is cabinet. Inside the cabinet you have a motherboard, okay, and you can see the chip, that is called chip. Okay, this is the प्रोसेसिंग चिप, जहां पे आपका सारा वर्क परफॉर्म हो रहा होता है एक छोटे से चिप पे. ओके, नाउ लेट्स सी सम वोकैबुलरीज. Monitor. So monitor is a screen that shows information from a computer. So monitor is a machine, okay, that has a screen and shows information from a computer. Keyboard is the set of keys for operating a computer. Mouse is a small device that is moved by hand across a surface to control the movement of the cursor on a computer screen. And CPU, also remember the full form of the CPU, that is Central Processing Unit, never forget it, is a part of a computer that controls all the other parts of the system. So I hope you have understood these points. Now let's see in a nutshell. The 4 main parts of a computer are monitor, keyboard, mouse and CPU. All the work we do on a computer is displayed on the monitor screen, where we can see all the work we are performing on the monitor screen. We use a keyboard to type letters, words and numbers, and we use a mouse to point at items shown on the monitor. So आपको ये चीजें clear हो रही होंगी, ठीक है? And CPU does all the tasks that we want the computer do. It is called the brain of the computer. Remember that, brain of the computer. So बच्चों, I think आपको ये चारों parts clear हो चुके हैं, right? So क्या करना है, revise कीजिए, exercise को try out कीजिए, okay? So you can see the exercise, check your knowledge. So that's all for this chapter, students. So now I'm gonna meet you in the next chapter, okay, with the new concepts, okay? Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.